Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter 4 agriculture in geography, and in the previous class we have studied about the three types of economic activities: the primary economic activities, the secondary economic activities, and the tertiary economic activities. And we have also seen that for the purpose of agriculture, we see that some favorable topography of soil and climate are important, and in the whole world 50% of people are engaged in agricultural activity, while in India two-thirds of its population is dependent on agriculture. And we have also seen that arable land is called that land on which agriculture can be done, and in which the crops are grown. That land is known as arable land, and we have seen that our country has a very good most of the land of our country is arable land. And then we have also discussed about different types of this primary activities like agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, and horticulture. Okay, and now today we will start with farm system. So what is this farm system? Agriculture, we can look at agriculture as a system. Just like in a system some input is given, and then processing goes on inside the system, and then it gives the output. And this is the system, this is how the system works. Input जाता है, then processing होती है, इनपुट जाता है सिस्टम के अंदर, प्रोसेसिंग होती है, और तब क्या निकलता है? आउटपुट. सो इफ वी कंसिडर एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम, व्हाट वी फाइंड, व्हाट आर द इनपुट्स? द इनपुट्स आर सीड्स, है ना, सीड्स इनपुट है, देन fertilizers and then machinery, and other than this labor is also input. So these are the input in a farm system. Okay, and then the processing is processing happens. So what are the operations which are held under processing, like plowing, sowing, irrigation, weeding, then the last operation is harvesting, है ना. तो processing में क्या आएगा, like plowing, है ना, then that sowing, plow चलाया, उसके बाद sow कर दिया सीड को, है ना, sowing किया, then irrigation की जरूरत पड़ेगी, उसको उसमें पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, है ना. And then weeding जो unwanted plants जो साथ साथ में उगाते हैं मेन क्रॉप के, उसको वीडिंग के, अभी उसको हटाने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड वीडिंग. एंड देन द लास्ट वन इज हार्वेस्टिंग, जब हम फसल की कटाई करते हैं. ओके, एंड नाउ द आउटपुट. व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज क्रॉप, जो कि फसल उगता है. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्रीकल्चर, लाइक जो रियरिंग ऑफ एनिमल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वूल प्रोड्यूस हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आउटपुट, है ना. तो आउटपुट में क्या आया? क्रॉप्स,
then that wool, dairy, and poultry. Okay, so this is the farm system. यहाँ पर इनपुट जाता है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, प्रोसेसिंग में इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं और तब ये आउटपुट आता है. ओके, नाउ वी विल कंसिडर टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Types of farming. So farming is practiced in various ways across the world, and it depends upon various factors. We can classify it into mainly two types, है ना? Mainly there are two types of farming, and this we can say classification of farming is done because of geographical condition, demand of produce, labor, and level of technology and all. So what are the two main types of farming? The first is called subsistence farming, and the second one is called commercial farming. So this is subsistence farming, and the another one is commercial farming. So now first of all we will deal with subsistence farming. So first of all we will discuss subsistence farming. So subsistence farming is a type of farming which is practiced to meet the needs of the farmer's family. As the name suggests, the farming is done for the purpose of subsistence in order to fulfill the needs of the farmer's family. जो भी उनके in order to live their life, they need whatever they need for that, in order to fulfill that need, those needs, this farming is done. So what we find that in this type of farming, low level of technology is used. Technology is not used of a very high level, but low level of technology is used, and then the labor is also only those who are family members, household laborers. Household laborers are used for the operation of this farming, and the output is also very small, है ना? And subsistence farming जो है उसको भी हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं, बट पहले हम ये इन चीज़ों को लिख लें कि इसके क्या फीचर्स हैं. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ subsistence farming. So first of all, it is done to fulfill the needs of the farmer's family. The second thing is use of low level of technology.
And the next one is this use of household labor. And the next feature is a small output. Okay, and now we will see that this subsistence farming can again be classified into intensive subsistence and primitive subsistence. Okay, so now we will see the classification of subsistence farming. Intensive, subsistence farming, and the next one is not intensive and primitive, है ना. एक हो गया हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिमिटिव So what do we mean by intensive subsistence farming? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि फार्मर जो है वो एक बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टिवेट कर रहा है एंड ही इज़ यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर बिकॉज द टूल इज सिंपल, सो more labor is required in this type of farming. And in this intensive farming, what is required that there should be large number of days with sunshine, है ना. सनसाइन अच्छी होनी चाहिए, देन सॉइल फर्टाइल होती है, और बिकॉज ऑफ दिस what happens that more than one crop is grown annually on the same plot, है ना. एक ही प्लॉट पे एक साल में के अंदर मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप जो है उसकी फार्मिंग होती है. इट्स नॉट कि पूरे साल में एक ही बार उसमें खेती होती है, उसमें एक से ज़्यादा बार खेती होती है ना. And like we see, rice is the main crop in this intensive subsistence farming. Other than rice, there are like wheat, maize, pulses, oil seeds, and we see that this intensive subsistence agriculture is prevalent in those areas which are thickly populated. The population is very thick, where the density of the population is very high. Like monsoon regions of South Asia, Southeast Asia and East Asia, यहाँ पर ही इंटेंसिव फार्मिंग होती है क्योंकि मानसून यहाँ पर अवेलेबल होता है. बिकॉज ऑफ मानसून इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, है ना. सो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इंटेंसिव का मतलब ये हो रहा है, इसके फीचर्स को हम लोग देखेंगे. इंटेंसिव subsistence farming. ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा? जो लैंड है वो बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. Then the next one is simple tools. Third is more labor.
and the fourth one is more than one crop is grown annually on the same plot. More than one crop annually on the same plot. Okay, so these are the features. One more feature is the rice is the main crop. Main crop is rice and other crops are wheat, maize, pulses, and what are the areas? South Asia, East Asia and Southeast Asia, where this intensive subsistence farming is done. And now we shift our focus to primitive subsistence agriculture. In this type of agriculture, we include shifting cultivation and nomadic herding. These two are included in primitive subsistence agriculture. Okay. Primitive subsistence farming. So this can also be divided into two parts: shifting cultivation and nomadic herding. So now we will see what do we mean by shifting cultivation. You have read about this in history when you were doing that tribals वाला जो आपका chapter था, tribals, Dikus and the vision of a golden age. उस में आपने shifting cultivation के बारे में पढ़ा. The same, both are same. उसी shifting cultivation की यहाँ भी बात हो रही है. So first of all, what we find that shifting cultivation is done in the thickly forested areas. Okay, and if we see in the on this in this world, there are so many thickly forested areas like the forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the places where shifting cultivation is practiced. This information is very important कि कहाँ पर shifting cultivation होता है ना. ये इस तरह के questions आते हैं. So you must remember where this shifting cultivation is practiced, and all these areas which we have just now mentioned, the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India, all these are the areas where heavy rainfall occur, and because of this heavy rainfall, quick regeneration of vegetation occur.
So what is done in shifting cultivation, that a plot of land is cleared by felling the trees को काट दिया जाता है और एक प्लॉट जो है उसको क्लियर कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, और जो ट्रीज काटे जाते हैं उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है. एंड आफ्टर बर्निंग द ट्रीज द एसेस आर लेफ्ट, है ना. सो दीज एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown in this plot of land. और जब एक बार खेती वो कर लेते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर व्हाट दे डू, दे लीव द लैंड. द लैंड इज़ अबैंडन्ड. लैंड को वो छोड़ देते हैं. अबैंडन मतलब छोड़ देना, ABANDONED, अबैंडन्ड. लैंड इज़ अबैंडन्ड. लैंड को वो छोड़ देते हैं. एंड कल्टिवेटर्स जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो एक नई जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं. सो दिस इज शिफ्टिंग. Their plot is not permanent. They used to shift from one place to another. They used to shift from one plot of the land to the another plot of the land, and that is why it is called shifting cultivation. And one more name is given to this shifting cultivation, and that is slash and burn agriculture. क्योंकि स्लैश करके, काट करके जलाया जाता है, यही दिस इज द प्रोसेस. सो इट इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न process also. Okay, and now we see the next one, that is nomadic herding. Nomadic herding, herding means क्या होता है, animals की rearing करना. For what purpose the animals are reared? In order to get their produce, जो भी उनसे चीज़ें मिल सके उसको कमर्शियल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, और जब घर से बचेगा तो कमर्शियल यूज़ के लिए वो किया जाता है ना. सो इस तरह की जो फार्मिंग है उसमें हर्ड्समैन जो होते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स, है ना. दे आर ऑल्सो मूविंग. शिफ्टिंग कल्टिवेशन में हमने देखा, इसलिए इसको एक ही के अंदर रखा गया, एक ही कैटेगरी में रखा गया. प्रिमिटिव है, ये बहुत पुराने समय से इस तरह की जो कल्टिवेशन है वो की जा रही है ना. शिफ्टिंग कल्टिवेशन. और दूसरी तरफ नोमैडिक हर्डिंग, मतलब जो हर्डर्स हैं, जो एनिमल्स की रियरिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट living at a place permanently, but they keep moving from one place to another with their animal. Why do they move with their animal? Because the animals need fodder and water, है ना. तो when the fodder and water of one place is used up, then they move to another place. Then according to season also they have to move from one place to another, and they have a very defined route, है ना. This type of what we find that the animals which are most commonly reared are sheep, camel, yak and goat. Okay, these are the animals who are most commonly reared, and these animals provide milk, meat, wool, hides and other products to the herder and their फैमिलीज, है ना. वो अपने यूज़ के लिए ही करते हैं. अगर अपने से बचा तो वो बहुत, मतलब दैट इज़ ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल दे कैन सेल इट, बट उनका पहला काम है अपने नीड को पूरा करना. बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग. ये अपनी आपको जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये काम हो रहे हैं. तो पहला काम है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना. ओके, अब ये कहाँ होता है? दिस टाइप ऑफ नोमैटिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा. एरिड क्या हुआ? जो बहुत ही ड्राई रीजन होता है उसको हम एरिड कहते हैं, ARID, है ना. तो जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सहारा क्या है? डेजर्ट है. तो दैट इज़ एरिड रीजन, बिल्कुल सूखा होता है, ड्राई होता है. इसके अलावा सेंट्रल एशिया में भी जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, और इंडिया में भी कुछ पार्ट से, जैसे राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर भी हर्डिंग्स होती है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग जब हम अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं तो उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. अब इसकी जस्ट अपोजिट एक दूसरा फार्मिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग.
तो कमर्शियल फार्मिंग जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और बेसिक डिफरेंस यही है कि कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कमर्शियल पर्पस से की जाती है, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए, है ना। जो भी, अगर वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, तो द पर्पस इज टू सेल द क्रॉप्स in the market, to sell the product of the animals in the market, है ना. So that is called commercial farming. So what do we mean by commercial farming? I told you, when crops are grown and animals are reared for sale in market, है ना. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एरिया का कल्टीवेशन हो रहा है that is very large. As we have seen in subsistence farming, the plot was small. Here the plot is very large. Okay, and in this type of farming, the capital which is used is also very large. Large amount of capital is used, and machinery is also used in this type of farming because this is capital intensive farming. इसमें बहुत पैसा लगता है क्योंकि the farming is done for the purpose of selling only, है ना. तो उस पर्पस से जब किया जाता है तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, तो इसलिए large amount of capital is used, machinery is used, and इसमें भी, इसको भी हम अलग अलग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो सबसे पहले आपको कमर्शियल फार्मिंग की जो मेन फीचर्स हैं दैट शुड बी लिस्टेड. फर्स्ट इज क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर क्रॉप्स crops are grown and animals are reared for commercial purpose, for sale in market. The second is large plot, and the third one is that the large amount of capital is used. Large amount of capital is used. है ना. So machinery is also used in this type of farming. We have seen machinery is used. Okay, and these are the small important features we have done, and now we will see what are the different types of commercial farming. There are 3 types of commercial farming. The first is commercial grain farming.
The second is that mixed farming. And the third is plantation. So we will continue with this discussion in the next class.